The problem is based on divisibility. Friends, this type of question, and especially from divisibility, at least one or two questions are asked in higher examination, IIT, UPSC, NTSC, Olympiad. Now I am giving an example. Now let us try. How can you solve this? Solve solution. Given expression, n square minus 1 I n plus 2 is equal to n, you can write this n minus 1 n plus 1. Okay, a square minus b square, that is n minus 1 n plus 1. If you multiply this, you will get this, and rearrange this 5n plus 2. In my mind, we have to make it as a consecutive integers. 5, 10, and then here it will be 8. You bifurcate 5n plus 2 into terms. Okay? You can write this n minus 1, n plus 1 from lower to upper, and 5 n plus 2. Okay? Again, minus 8, n minus 1, n plus 1, n minus 8 over. Okay. Now you can write this 5 n minus 1 n plus 1 n plus 2 minus 8 n minus 1 and n plus 1. There, this is a product of 4 consecutive integers, positive consecutive integers. And this is 3 consecutive integers. जैसे 5 के बाद 6, 7, 8. इसको एग्जाम्पल लेकर भी बताएंगे. And 3 consecutive. Every product of n consecutive integers is divisible by factorial n. ठीक है? It is the product of 4 consecutive integers. देखिए n minus 1, then plus 1, ऐड करिए n, फिर plus 1, right? ये consecutive हुआ, एक के बाद एक आ रहा है, एक का डिफरेंस. ये भी n minus 1, then n, then plus. The product of 4 consecutive, product of 3 consecutive. Then it must be divisible by factorial 4. It must be divided by factorial. Okay? Since n minus 1 and n plus 1, n plus 2 is the product of 4 consecutive integers, hence it is divided
बाई फैक्टोरियल 4 मतलब 4 into 3 into 2 into 1 that is 24. Okay, and n minus 1 and n plus 1 is the product of three consecutive integers so it should be divided by factorial 3 is equal to 3 into 2 into 1 is equal to 6. यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ये एक्सप्रेशन फैक्टोरियल फॉर 24 से डिवाइडेड है तो 5 into that will be ऑटोमेटिकली डिवाइडेड हो जाएगी। ये फैक्टोरियल 3 मतलब 6 से डिवाइडेड है, then 8 into that must be divided मिनिमम 1 ले लीजिए अगर तो भी 8 6 या 14 ये 24 से डिवाइड। ओके, तो ये भी 24 से डिवाइडेड है, ये भी 24 से डिवाइडेड है। ओके, तो इसको आपने एक्सप्रेशन ए ले लिया, यू कैन टेक एक्सप्रेशन ए और यू कैन टेक एक्सप्रेशन बी। A and B are separately divided by 24, then A minus B will also be difference, A minus B will also. Now A and B are separately divided by 24. Note that n minus 1 and n plus 1 is divided by factorial 3 is equal to 3, then 8 into n minus 1 into n plus 1 will be divided by okay, as difference A minus B i.e. phi n minus 1 and n plus 1 n plus 2 minus 8 n minus 1 and n plus 1 will be divided by okay. Now take an example numerical. What will happen? सॉल्व हो गया? कोई भी ले लीजिए, कोई भी 6 consecutive इंटीजर ले, 6 consecutive इंटीजर्स ले लीजिए, 6 consecutive इंटीजर्स लीजिए, मान लीजिए 7 into 8 into 9 into 10 into 11 into 12 1 2 3 4 5 6 एक कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, इनका प्रोडक्ट किससे डिवाइड होगा? फैक्टोरियल 6 से। फैक्टोरियल 6 मीन्स 6 into 5 into 3 into 2 into 1। ओके, देखिए 6 2 जा, 2 2 जा, 3 3 जा,
5 2 जा, तो कंप्लीट डिवाइड है। और कोशिएंट कितना आएगा इसमें, कोशिएंट कितना आएगा 7 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 11, ये कोशिएंट आएगा। इसके भी फार्मूले हैं। ओके, कोशिएंट आता है के प्लस एन सी एन, तो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, सिंपली, या और भी छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आप ले लीजिए 8 इंटू 9 इंटू 10, 3 कन्सिक्यूटिव तो फैक्टोरियल 3, मतलब फैक्टोरियल 3 दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, कर दीजिए, 2 5 जा 3 3 जा, कितना आ जाएगा 120। ओके,